सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता ध्यानम। कल हम लोगों ने 3 श्लोकों के ऊपर विचार किया। You have seen 3 shlokas yesterday. The final and third was connecting how Bhagavan Sri Krishna is given the message for us through the devotion, through dedication, through making a mudra, jnana mudra, and therefore one who is giving the nectar of Bhagavad Gita to us become a person who is amaraha. Once you have got this nectar, amrit, then we have no fear of death. As long as fear is there, we are not happy. So therefore we should have, so therefore this third sloka is very important. Prapanna parijataya. He is a kalpavriksha. कल्पवृक्ष ट्री जिनके नीचे जाने के बाद हर एक संकल्प अपना साकार होता है, हर एक भक्त का संकल्प साकार होता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो क्या है, एक प्रकार से पारिजात। और ऐसे पारिजात के लिए, लेकिन पारिजात किन के लिए? कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? प्रपन्नः, प्रकर्षेण पन्ना, one who has got sharanagati, complete dedication, so that for that person he is parijata. उनके लिए वो क्या है? कल्प वृक्ष है। जैसी कल्पना करो वैसे आपको उसका फल मिल सकता है, इसलिए वो पारिजाताय, ऐसे कल्प वृक्ष भगवान के लिए नमस्कार है। कृष्णाय नमः। Then totra vetraika panaye, one who gives the control of the life to is his hand, जो अपने सर्वस्व को उनके हाथ में देता है, अपना सारथी बना देता है, घोड़ों का लगाम उनके हाथ में देता है। हमारे घोड़े कौन से हैं? इंद्रियारूपी घोड़े। These all senses are horses. When they are well trained, they can run on the highway. Otherwise, they can take you in the right and spoil or destroy your chariot. So therefore, one should have the indriyas called horses. And therefore, totra vetra ekapanaye, one who controls our life. That means he will not allow our senses to go away from the mainstream, so that he can attain the moksha, parama purushartha. And giving the message of knowledge, holding all the 5 fingers, the 3 fingers standing for your senses, mind, and your physical body. Attraction in this worldly, whatever attracts you, and then you run after it, that's it, you have gone. You have spent times and days and months and whole life, still you are wanting it. So I want is constant, and then as long as wanting is there, the satisfaction is not going to have, because
the want is continue. Whatever you enjoy the things, and again after enjoying, again there is want. So therefore, physically, mentally, and sensually also, everything is always attracting you. And therefore, he says, once you have got the knowledge, the three things are mithya. As we have, अभी तक मैंने जितने इंद्रियों को तुष्ट करने की चेष्टा की, मन को खुश करने की चेष्टा की, और फिजिकल लेवल पे शरीर को जो जो मैंने जो जो चाहा उसको देने की इच्छा की, आई हैव spent time and time and time, but I didn't get return as the santushti or satisfaction. Therefore, as long as the jiva is with the three things, they he is away from the main, the chetana or the nitya atma. Once you got the knowledge, what knowledge? Upadesh, through upadesha. What upadesha? Tat tvam asi. You are not these three things. Anitya sansara you are not. You are that Atma. And through that you turn yourself uh, and make yourself connected with that Atma. इसलिए एक बार आत्मा के साथ जुड़ जाना मतलब इनसे अलग होना. You live alone, three of them, and you get hooked or connected with this Atma, and that is called knowledge, and that is called Jnana Mudra. And who is holding this mudra? That Atma, that Bhagavan is called Jnana Mudraya. Who is showing this mudra of knowledge? That Bhagavan Krishnaya Namaha. And also my namaskara to who has taken Amrita, the nectar from, from Gita. Gita has got knowledge from Upanishads. All this Veda, through that Vedas, Upanishads are the cows. This next shloka also says same thing. हम लोगों ने इसको देखा था, इसमें गीता महात्म्य में यही श्लोक आगे है, चौथा वाला. सर्वः उपनिषदः गावः दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थः वत्सः सुधीः भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम. Sarvaha, all these Upanishads are cows, and cows eats so many things. The dry grass it eats, but when you get the milk, is complete food, nothing less. That means what? Cow eats so many things, but you get the pure milk. Here, Upanishad, Vedas talk so many things with so many karmas, so many phalas, कर्मों का, फलों का, सबके बारे में वेद कहता है, लेकिन उनका जो निचोड़ आया है वो क्या है? एक प्रकार से उसका उपनिषदः, सर्व उपनिषदः गावः, सारे उपनिषद गायें हैं, और उन गायों से दूध निकाला किन्होंने? दोग्धा गोपाल नंदना. भगवान ने इन गायों से क्या निकाला है? दूध निकालना है. और गाय दूध तभी देती है जब साथ में बछड़ा. When the calf is there, then only the cow gives milk. Otherwise, these Jersey cows, they are cows namely, but they are like milk machines. They are not real cows. Therefore, you want to worship the cows, you cannot worship this what Jersey cow. They don't have any quality of Desi cows. Puja Swamiji used to say these are just milk machines. So cow should be that cow will give, allowed to give milk when the calf is there. Because she doesn't give milk for you, she gives milk for the calf.
and you are beneficiary. He says, Sudhihi Bhokta. We are beneficiary. This Upadesha is given to Arjuna. भगवान ने उपनिषद उपदेश इसके लिए दिया है, अर्जुन के लिए दिया है, बट हम लोगों को भी उसका लाभ मिला. वी आर बेनिफिशियरी. भोक्ता सुदेही, दैट मीन्स वी हैव गॉट गुड लक, विवेका, एंड we are giving time to study this Bhagavad Gita. So that means we are vivekinah, sudhihi bhokta, and that is how Gita Amritam Mahat. And इसीलिए भगवत गीता को एक अमृत कहा गया. गीता अमृतम महत. दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, दिस इज वेरी बिग. महत अमृतम, जो जन्म मरण के चक्कर से हमको बचाता है ना. जीवन, जो मनुष्य का जीवन उसको सार्थक करा देने वाला अमृत है, इसलिए महत अमृतम. व्हाट? गीता. And that is dugdham. This is dugdham is milked by Bhagavan Krishna, and then the calf was Vatsaha Partha. अर्जुन वहां मुख्य एक बछड़े के रूप में, और भगवान ने इन गायों का दूध निकाला. मतलब सारे उपनिषद गाय हैं, और उससे निकला हुआ ये ज्ञान, उससे निकला हुआ ये सारांश, तो भगवत गीता जो नॉलेज है वो सभी के लिए अर्जुन के माध्यम से हम सभी को उसका लाभ मिल रहा है. सो वी आर लकी टू हैव दिस अमृतम. नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम. Again for Bhagavan Krishna this praying. Vasudeva sutam devam kansa chanuramardhanam devaki parama anandam krishnam vande jagadguru. Normally this shloka we chant from the childhood itself. Small, even this Bal Vihar, our people they teach this small shloka. So very simple, but I got meaning. Krishnam Vande, my salutation to Lord Krishna. And who? He is not ordinary. He says Jagat Gurum. He is not a guru of one or two person. He is the guru of whole university, universe. Jagat, Sampurnam, Jagat. All this creation, he is the guru, because the common message to each and everyone, everybody is bound by their own raga and dvesha, and this Bhagavad Gita knowledge of Atma, relieves from, makes you free from this bondage, and that message has got by Bhagavan Krishna. Therefore, this is the message to each and everyone, and therefore everyone is seeking the freedom. Pujya Swami used to say, the small child just want to stand and step. If you hold him, he says, no, leave me alone. I want to walk by myself. He may fall once or twice, but the child himself, he wants to have freedom. Free from any kind of crutches. The crutches are good for some time, but later on, everybody wants to have free from it. The same way, crutches you use, things you use to get support, but time comes we want to have independency. The same way, Bhagavan is the teacher to everyone, because he gives the message of independency, free
from all kinds of bondage. So that kind of Bhagavan, he is not a ordinary, he is a Jagat Gurum. How the Visheshanas or Gurum or Krishna is Vasudeva Sutam. Hmm. He is a Sutam, means son of Vasudeva, one who took uh, Devaki and Vasudeva and Yashoda. All these people, one somebody give him birth and somebody, took care of him, and he was growing up in a village where Vasudeva and Devaki was. Vasudeva and Devaki has given the birth, and therefore he says Vasudeva's son is Vasudeva. And that's why we say Vasudeva, Vasudevasya Putram. And the other meaning is Vasati Sarvatram, one who dwells everywhere. That's called Vasudeva, Vasati Sarvatra, one who is all pervasive, called Vasudeva. And the son of Vasudeva is called Vasudeva. Devam, he himself is the Chetanam, Kansa Chanura Mardanam, and one who has removed or destroys the all Rakshasas. Chanura Mardanam. We see so many Leelas during his childhood. So he has removed them or destroyed them when the Leela was there. So therefore, the Rakshasas, not only physically, we also suffer through these Rakshasas, my own vikaras, the vikaras bother me. Ragaha, Kamaha, Krodaha, all these things are like the Rakshasas. So therefore, once you seek of his help, his blessing, he will definitely destroy them. He will make us free from. उनसे हमें वो हमेशा के लिए फ्री कर देते हैं. इसलिए जीवन में जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया, उनको इन राक्षसों के, राक्षस क्या है, एक प्रकार की वृत्ति है मेरे अंदर, उन वृत्तियों से वो फ्री कर देता है. तो भगवान का आशीर्वाद हो. जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, भक्ति के, उनके लिए ऐसे विकारों से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता. दे विल बी फ्री फ्रॉम. देवकी परमानंदम. नो वसुदेव सुतम, नाउ ऐसे देवकी परम आनंदम. देवकी को आनंद देने वाले. क्यों बाकी लोगों को नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते. ही इज रेडी टू गिव द जॉय और आनंदम, बट ही सेज everybody should what they should have the dedication or devotion like Devaki. Devaki was the, and he always has got that Vatsalya Bhakti, who treat him as a son. And once you keep the as a son, and then you treat him like a son, like a balakaha, like Shishu, and then his Leela, you can really enjoy everything. Therefore, how Devaki could enjoy during his childhood, same way we treat as a Balaka Krishna, he or she can also get the same Ananda. Therefore, Devaki stand for the devotion. Devaki Parama Anandam. ऐसे भगवान कृष्ण जो जगत के गुरु है, जगत गुरुम कृष्णम वंदे. नेक्स्ट वन. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला.
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला भवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नील उत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेल आकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सा उत्तीर्णा खलु पांडवैः रणनदी कैवर्तकः केशवः. So it's a special form here. An example, like there is a boat and there is boatman who takes this boat from this side to that side, and boat always travel on the water. Therefore here he shows the picture of a huge lake or a river where all these parts, those who are in Mahabharata, he fits everybody in that river. So this river is what? River, they have two kinds of sight, Bhishma, Drona, Tata. These two are two sides, very strong. भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इस नदी के दो तट है. इनके बिना ये नदी संभव नहीं है. This river is not possible if Drona and Bhishma Pitama is not there. So therefore, these two are the two kinds of the part of this river, strong part. So there is a tata, दोनों तट है उसके. और उस केवल नदी नाम की नहीं, उसके अंदर जल भी है. It's not only namely river, has got water. What kind of water? Jayadratha jala. नदी में अगर पानी नहीं है तो नाम की ही नदी रह जाती है, बट यहाँ पे कहते हैं इसके अंदर जल है. कैसा? जहां नजर डालो वहां पानी दिखे तो वो नदी कहलाती है. तो यहाँ पे कहते ये युद्ध रूपी नदी है. उसके अंदर जयद्रथ जो राजा था उसकी बहुत भारी सेना थी, और उसके अंदर जिधर भी देखते तो ही सेना दिखाई देती थी. इसलिए उसके जयद्रथ जला, जयद्रथ. His army will, therefore there was it's named as a jala. What? Jayadratha. Jayadratha is like water in this river. गांधार नील उत्पला. गांधार देश का राजा गांधार, he was like a blue lily in this river. उसमें नील उत्पला, बहुत सुंदर एक खिला हुआ फूल एक बाजू में उस नदी के, ऐसा सुंदर दिखने वाला ए अट्रैक्टिव किंग एंड हिज आर्मी. Therefore गांधार is called, गांधार देश का राजा जो गांधार, उसको एक प्रकार से they named as a नीला उत्पला, the blue lily of this river. शल्यग्राहवती.
शल्य, उसमें जो एक बड़ा भारी योद्धा, उसको कहा जाता है ग्राहवती, है ना। ऐसी मछली जो बड़े बड़े जहाजों को भी पलटा देने वाली, बड़े बड़े चीजों को, जानवरों को निगलने वाली, है ना, जो शार्क मछली कही जाती है, ऐसी द बिग फिश which can swallow so many things or damage big the boats on the water. So that kind of person was Shalya, was like a big fish in this river. Therefore, it is called Shalyagrahavati. Kripena Vahani. Bhishma Pitama and Dronacharya was the two sides of this river. But he says Kripacharya was, you know, flow of that river. एक प्रवाह था, कृपाचार्य वाज द एक फ्लो, उसका जो है नदी का प्रवाह थे, इसलिए कहा कृपेण वहनी। क्यों? was very active, he will not stay at one place, always moving from here to there. Therefore he was like a water flow of this river, कृपेण वहनी। क्योंकि नदी का पानी जो है हमेशा बहता, लगता है एक जैसा आ रहा है, लेकिन every moment is changing. The same way he always keep moving from place to place is called Vahani. Kripena Vahani. Kripacharya was a flow of this river. Karnena Velakula. जो महान योद्धा, पांडवों का ही भाई मानने वाला ये कर्ण, जिसको सूत पुत्र से जो है इनको हमेशा डेमोलाइज करते थे, उसको वो नीचा दिखाते हुए केवल दुर्योधन ने उसको राज मुकुट पहना करके उसको कुछ सम्मान दिया। तो ऐसा कर्णा वाज लाइक ए वेलाकुला। वेला मीन्स द क्रीपर इन वाटर, grows, and anybody steps in, it binds that feet, that leg. So this part of this Karna was dangerous. Who comes in his spell, it gets, bound. It's very difficult come out from his, that kind of grief. So therefore, he was, I say, Vela Kula, in the water. The creeper is very dangerous. When you step in, you'll get, bound. It's not easy to come out from it. Once Karna takes you, and it's very difficult to come from his, that kind of yuva. And then he says Ashwathama Vikarna. So Ashwathama is a son of Dronacharya, and one of the very bright and very huge Yodha, the brilliant warrior Vikarna. Ashwathama and Vikarna, there was like a crocodile of this river. Ghora Makara, Bhayankar, dangerous crocodiles of this river. How once they catch the person or that warrior, very difficult to come out from that spell. So therefore, Ashwathama and Vikarna were the great warriors, and they were like a crocodile in this river, Ghora Makara, very dangerous crocodile. That kind of part have got in this river. ऐसे भयंकर रन नदी के अंदर ये दोनों अश्वत्थामा और विकर्ण, ये दोनों कौन थे? भयंकर, ये मगरमच्छ से जिनके पकड़ से बाहर आना बहुत दुर्लभ था, कठिन था, मुश्किल था, इसलिए उनको नाम दिया है घोर मकरा। बहुत कठिन और बहुत खतरनाक दो मगरमच्छ।
दुर्योधनावर्तिनी, जो भंवर होता है पानी के अंदर ऐसा घूमता है, उसके अंदर आदमी जो भी जानवर जाता है तो बाहर आना बहुत मुश्किल है। द वेल पुल, keeps swinging, anything goes in that, it is very difficult to come out, it goes down. So same way Duryodhana was like that, ऐसे आवर्तिनी, द वेल पुल, उसका जो एक भंवर था जिससे भी बाहर आना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए दुर्योधन के यहाँ पे जाए नाम दुर्योधना आवर्तिनी, जिसके चक्कर में एक बार कोई आता है तो वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल, तो इसलिए उनका नाम दिया यहाँ पे आवर्तिनी, दुर्योधन आवर्तिनी। कहते कि यहाँ पे इवन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी उसके ही ऐसे चक्र में आ गए। जब पांडव वन में थे और दुर्योधन उस समय राजा था, चाहे सत्य से बना हो चाहे असत्य से बना हो, लेकिन उसने अपने आप को वहां राजा स्थापित किया और पिताजी को केवल रबर स्टैम्प बना करके he was staying there, but he was the main king and he could have more control over each and everyone when who the citizenship people are staying in Hastinapura. Therefore, यहाँ पे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी उसी के ही इस चक्कर में फंसे हुए थे, इसलिए तो उनको सही समय पे सही निर्णय वो नहीं ले पाए और द्रौपदी जैसे वस्त्र अपहरण के बाद भी उनको कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि द स्पेल ऑफ दुर्योधना इज वेरी स्ट्रॉन्ग, nobody could come out from it. Therefore Duryodhana was as a whirlpool of this river, Duryodhanavartini. So this dangerous river is not easily to cross this river, but still and yet all this Pandavaihi Rananadihi Uttirna Khalu Nishchit, indeed become a dangerous river, but Sa Uttirna. Sa stands for the river, feminine gender. Uttirna, crossed. Kaihi, Pandavaihi, passive word. Pandavaihi Uttirna. का उत्तीर्णा? सा, संस्कृत में आता है ना पैसिव, यही है पांडवैहि उत्तीर्णा, पांडवों के द्वारा उत्तीर्ण की गई। कौन सी? वो रण नदी, सा रण नदी, रण नदी के लिए सा आ गया प्रोनाउन। ऐसी जो रण नदी संग्राम की नदी है, पांडवों के द्वारा निश्चित रूप से, खलु का था निश्चित रूप से, सोतीर्णा मतलब उसको क्रॉस किया गया, उत्तीर्णा रण नदी। But who was the driver? Very important. If there is very difficult road, the route, if the driver is expert, he can really take care of the people inside. Therefore, he says the Kaivartakaha, the driver, Sarathi of that boat, who Keshavaha Kaivartakaha, was expert driver who could take away all the obstacles, all the dangerous things, he could take care of it and safely landed in the other side. सा उत्तीर्णा, ऐसे खतरनाक नदी से भी उन्होंने इन पांडवों को क्या किया? सेफली उनको उस अदर कॉर्नर दे हाव cross this river because of Keshavaha. He's a magician, he will not show his magic, but people know how he is expert.
Therefore, this is very difficult time, difficult moment, but he takes care, and that is how he was all the way with these Pandavas, and therefore Pandavai ही उत्तीर्णा. ऐसे पांडु के पुत्र और उन पांडु के पुत्रों के द्वारा इस रण नदी को उन्होंने पार किया. इसलिए he is the important, because wherever Bhagwan Ishvara or Krishna is there, then he, the devotee, may face so many problems, but he will not leave them in the danger. He always take care and bring them in the safe place. And that is how his nature is. Therefore, Keshavaha Kaivartakaha. So, भीष्म द्रोण तटा, जो दो तट थे इस नदी के, भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य. जयद्रथ जला, द वाटर was Jayadratha, because maximum army in this battlefield. गांधार नीलोत्पला, गंधार देश का राजा was ऐसे ब्लू लिली, उसके अंदर एक सुंदर नीला फूल दिखता था उस नदी के अंदर खिला हुआ. शल्यग्राहवती, शल्य जो योद्धा था वो एक प्रकार से शार्क, जो मछली होती है, बड़े बड़े जानवरों को निगल जाती है, बड़े बड़े नौकाओं को उल्टा देती है. दैट काइंड ऑफ डेंजरस, that fish, he was like a shalya. And Kripacharya was Vahani, the flow of this river always has got movement. He is always busy. Karne न वेला खुला, करना was a क्रिपर, है ना, बहुत बड़ा क्रिपर था उस नदी का, जिसके अंदर जो भी पैर डालता उसके अंदर वो फंस जाता. अश्वत्थामा और विकर्ण बड़े भारी मगरमच्छ थे इस नदी के. और द्रोणाचार्य क्या था इसका, दुर्योधन वाज आवर्तिनी, एक प्रकार से भौरा था उस नदी का. ऐसे खतरनाक नदी को भी भगवान कृष्ण ने अपने प्रिय पांडवों को बहुत सुरक्षित उस स्थान पे, उस तट पे ले गए. इसलिए कैवर्तकः केशवः, सा रण नदी सोतीर्णा, उत्तीर्णा. निश्चित रूप से भगवान ने ऐसे खतरनाक नदी से इन पांडवों को, अपने भक्तों को पार कराए, क्योंकि हमेशा ऐसे समय पे भगवान आपको मदद करते हैं. We'll chant this fourth anvasa. सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला. अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरणनदी. कैवर्तक केशवः. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः.
हरि ओम।